Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the Hindu newspaper dated 12th of September 2021. तो आज के हिंदू डिकोडेड एनालिसिस लेक्चर में हम 12 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिकोड करने जा रहे हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू ऑल नो, क्लास पीडीएफ्स आर अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लास का जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाता है. ठीक है, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो सीधा. So let's get started without any delay. So in today's Hindu newspaper analysis, we are going to study a lot of articles directly related to your preliminary examination. यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना, उससे रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू राइट देम डाउन. वी आर गोइंग टू शेयर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट हैव बीन आस्क्ड from the topics that we are going to study today in the previous year question papers as well. तो make sure कि you are taking down the notes accordingly. ठीक है, अपने notes बनाते जाइएगा ताकि आपको कोई भी point prelims के लिए आप miss ना करें. तो शुरू करते हैं आज का lecture. The first article that we are going to study is on UAPA. Okay, so magistrates cannot extend probe under UAPA. Let us first understand what is the meaning of this term probe. Probe का मतलब क्या होता है? So probe word means investigation. Probe का मतलब होता है examine करना किसी चीज को, investigate करना. ठीक है? So Supreme Court has held that magistrates cannot favor an investigating agency by extending the period of probe in Unlawful Activities Prevention Act cases at will. The investigating agencies which are investigating the cases under the UAPA law, the magistrates cannot favor them and give them extra chance or extra time or extra period to investigate. Right? 90 days का time दिया है, तो 90 days के अंदर ही investigation पूरी होनी चाहिए. Magistrates favor नहीं करेंगे investigating agencies को. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स इट इज फाइनल. ओके, दैट मीन्स इट्स फाइनल मीन्स दैट्स एन ऑर्डर फॉर द मजिस्ट्रेट्स. Now what is UAPA? UAPA was passed actually in 1967, and then after in the past few years there have been different changes and different amendments in the act. Okay, so UAPA, it aims at effective prevention of unlawful activities. As the name goes, Unlawful Activities Prevention Act. So it aims to prevent the unlawful activities associations in India. And what is an unlawful activity, you will ask now? Ki ma'am, there should be a definition now. Accordingly, we can measure what kind of activity comes under this category. So unlawful activity means any action if it is taken by an association or a group of people or a single individual with the intention to harm the territorial integrity and sovereignty of India. भारत की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को अगर इस इंटेंशन से हार्म करने की कोशिश की जा रही है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन के द्वारा, तो उसे हम अनलॉफुल एक्टिविटी की कैटेगरी में डालेंगे. And this act gives complete control and complete power to central government. So central government can decide that this activity is unlawful or not through the passing of official gazette. Okay, and what are the punishments that are given? See, there are different punishments. Lifelong imprisonment is also one of them, but the highest punishment is death penalty and life imprisonment. कुछ imprisonment ऐसी भी होती है कि चलो कुछ साल की सजा मिल गई, but जो highest level of punishment है वो death penalty या life imprisonment है. एंड यूआपा के अंदर ना सिर्फ इंडियंस चार्ज नहीं होंगे, फॉरेन नेशनल्स भी चार्ज हो सकते हैं. इट इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट टू इंडियंस बट फॉरेन नेशनल्स आल्सो हु आर कमिंग इनटू इंडिया विद द इंटेंशन टू डिसरप्ट द इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री. एंड see, here investigating agency is being talked about. So here the investigating agency can file a charge sheet and in maximum 180 days after the arrest has been made. Okay, now here you will read in this article, under UAPA investigation has to be completed within 90 days. तो charge sheet file करेंगे 180 days में. बाद में I told you there have been different amendments to this act. So now the investigation has to be completed within 90 days. This is important. और अगर ऐसा नहीं हुआ then the accused is entitled to default bail.
So that is why the magistrates have been informed and ordered by Supreme Court. Only special courts can consider the plea, but magistrates cannot extend the investigating time under UAPA. Okay, point clear हो गया? Now in 2004 there had been an amendment, and this amendment of 2004 added the word terrorist act to the list of offences to ban the organizations for terror activities. Okay, point clear हो गया? टेररिस्ट एक्ट टर्म को इंक्लूड किया गया है एक्टिविटीज की लिस्ट में अंडर यूआपा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये जो एक्ट है ना 2019 में इसको अमेंड किया गया था। दिस एक्ट वाज amended in 2019 also, and the act empowers the DG of National Investigation Agencies to grant permission of capturing or attaching the property when the case is getting investigated. Okay, another important article, this is related to art and culture and modern Indian history. So Indian values offer solution for global terror, says Prime Minister. Here, Prime Minister Narendra Modi on Saturday described September 11, 2001 terror attacks in the US as an assault on humanity. And he was also remembering the Swami Vivekananda's speech in US which he gave on the same date, September 11, 1893. This is important. स्वामी विवेकानंदा जी ने शिकागो में जो अपना सबसे बढ़िया स्पीच दी थी ना, जिसकी वजह से इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअली पहुंच गया था, तो वो सितंबर 11, 1893 में दी थी। स्वामी विवेकानंदा जी was also initially known as Narendra Nath Datta. He was born on 12th of Jan, 1863. Okay, after 30 so years he gave this speech, and he was a monk, and he was the great disciple of the great master Ramakrishna Paramahans ji. उन्होंने वेदांत की फिलॉसफी और योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया था। व्हाट इज वेदांत? वेदांत इज बेस्ड ऑन उपनिषद्स एंड द summary and the interpretation and the meanings of Upanishads. The Vedanta philosophy says that we need to inquire about Brahman. Brahman is the ultimate reality. Nothing is real other than Brahman. And this is the ultimate concept of all the Upanishads that we study. And वेदांत के जो आपके जो किताब हैं जो वेदांत की फिलोसफी को प्रोपोगेट करती हैं वो है वेदास। देयर आर 4 वेदास ना, एंड वेदांता फिलोसफी सेज दैट आवर अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन द नॉलेज ऑफ मोक्ष, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस संसार। ओके, Unacademy brings UPSC Mega Combat, which is a UPSC CSE Prelim Special. This combat is all India free scholarship test which is going to be conducted on 19th of September 11 AM in the morning. It's a live test. If you get a rank in this test, you will be in a position to stand a chance to win scholarship from a pool of rupees 10 crore with a guaranteed discount on participation. There will be 60 minutes time wherein you will have to solve 56 questions, and the link is given below this lecture in the description box. You can click on the link and you can use the invite code ARPITA10 to enroll today to this Unacademy UPSC Mega Combat. This combat is prelim special and you will stand a chance to win scholarship only if you give the test live on 19th September 11 AM in the morning. ये एक चांस है आपके लिए अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का, जानने का कि यूपीएससी के क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं, किस पैरामीटर पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरीके से वो रैंकिंग या फिर मार्क्स अलॉट करते हैं। और इस स्कॉलरशिप में इनरोल करना फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पॉसिबल है अगर आप आज ही फटाफट से जो लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके आज इनरोल करते हैं और इनवाइट कोड यूज करते हैं ARPITA10। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स पे अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा और लाइव टेस्ट सिर्फ एंड्रॉइड ऐप पर ही आप दे सकेंगे। तो मिस मत कीजिएगा इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी जहां प्रीलिम्स के लिए भी सीखेंगे, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्कॉलरशिप जीतने का चांस भी आपको मिलेगा। Enroll today. Another important picture that I got from the newspaper was about this jumbo journey. Herd of elephants, herd means झुंड जो होता है, returning to Kaziranga National Park from neighboring hills on Saturday. Now there have been a lot of questions that have been asked about elephants and Kaziranga National Park and Tiger Reserve in the prelims question paper, and this is the snippet. ये 2020 का जो question paper है प्री का, उसमें second question आया था with reference to Indian elephants. Consider the following statements. Leader of an elephant group is a female. Maximum gestation period can be 22 months. Elephant can normally go on calving till the age of 40 years.
only. Among the states in India, highest elephant population is in Kerala. So there is an IFS officer also, Parveen Kaswan sir. You must go through his tweets. He tweets about lot of these issues that are going on and lot of these species that we see in the environment. And there have been various questions in UPSC's prelims question paper that have been taken from Parveen Kaswan sir's tweets itself. Okay, so the correct answer here is first statement, leader of an elephant group is a female. Sir says yes, in majority of cases leader is a female and it is called as matriarch. Second statement, maximum gestation period can be 22 months. Yes, 22 to 23 months is a gestation period. Now what is a gestation period? Gestation period means the fetal development period from the time of conception until birth. जब तक जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस द जेस्टेशन पीरियड इज 9 months ना. एक ह्यूमन मदर जो होती है वो अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को रखती है. वो 9 महीने जो होते हैं वो जेस्टेशन पीरियड होते हैं. ठीक है. Now, the third statement, an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. They can give birth beyond 50 also, even 60. So, third statement is wrong. Fourth statement, among the states, highest elephant population is in Kerala. No, it is Karnataka. So, over here you will see that 1 and 2 are absolutely correct. So, I would recommend you to follow Parveen Kaswan sir on Twitter. Twitter पे ना आप Parveen Kaswan sir को follow कर सकते हो ताकि आप इस तरीके के questions environment ecology के solve कर सको timely. ठीक है? Coming on to the next important article now. Sheltered vultures now at home with nature. In October 2020, there were 8 critically endangered, underline this, Oriental white-backed vultures. They were released into the wild. ये point important है, Oriental white-backed vultures, because there have been questions regarding species in the prelims question paper. So make sure that you study about these species. When we talk about the Oriental backed vulture, these are, underline this, resident birds. ये migratory birds नहीं होती हैं. These are not migratory birds. This is important point. Please write it down. Okay, these are not migratory. These are resident birds. So they largely stay within a radius of 50 to 100 kilometers of the breeding center. Okay, and they were once very common, but now they are on the verge of extinction in India. That is the amount of risk that they are facing right now. Okay. अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अनअकैडमी कॉम्बो अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी सीएसई. वाई कॉम्बो? बिकॉज कॉम्बो में आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी के लिए लेक्चर्स, नोट्स, बुक्स जो आपको घर तक डिलीवर की जाएंगी, 101 टेस्ट सीरीज. अब 101 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की एट जस्ट 49,679. ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि कल से प्राइस हाइक होने वाला है. तो आप अगर कोड यूज करते हो अर्पिता 10 तो आपको इसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. बैचेस शुरू हो रहे हैं आज से, दैट इज 15 सितंबर से. तो आज के आज सब्सक्राइब कीजिए, लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप फटाफट से सब्सक्राइब कर सके विदाउट एनी डिले. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टुडे एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड अर्पिता10 to get your 10% discount as well. This was all for today. I hope you enjoyed the lecture. Thank you and have a wonderful day ahead.